Hello, dear learners in literature. Good morning. Today we will discuss two literary figures. Very first, irony, and other one, satire. These are taken very confusing in the meaning or in understanding. Let us discuss one by one with their outstanding characteristics and their recognitions. One thing is also to be remembered that through these discussions, we discuss very informative, keeping in mind one thing to be helpful for the academic or a competitive purpose. So, in a nutshell, we discuss with the essential informations. When we come to irony and try to define irony, in literary viewpoint, irony means a literary weapon to attack upon disarrangement, error, mistake, or apparently opposite in meaning. In other words, if we try, irony means a take of words very sharply and runs opposite in existence and its meaning just opposite what is said. That means आयरनी साहित्य में एक ऐसा अलंकार, ऐसी विधा जिसमें किसी गलती, किसी अव्यवस्था पर शब्दों के माध्यम से उस पर प्रहार किया जाए, जिसमें कहा कुछ जाए और उसका अर्थ कुछ और निकले, ये लिटरेचर में आयरनी कहलाता है। अब सबसे पहले यदि हम इसके पर्पस की बात करते हैं कि लिटरेचर में आयरनी व्हाट पर्पस फॉर, तो सीधा है जब किसी संस्था, व्यक्ति की गलती या अव्यवस्था पर ये अप्लाई किया जाता है तो उसका मतलब है टू करेक्ट, टू मेंड अप एंड टू रिफॉर्म, दैट इज द मेन पर्पस। तो उसका मेन पर्पस ये रहेगा। यदि हम बात करते हैं यूज कि ये कहाँ प्रयोग होता है लिटरेचर में, तो बात यह आएगी इन बोथ प्रोज और पोइट्री। आयरनी आपका प्रोज और पोइट्री दोनों में प्रयोग होगा। और काइंड्स की यदि हम बात कर रहे हैं तो बेसिकली आयरनी के काइंड्स में यदि हम बहुत बेसिक रूप से हम बात करते हैं तो देर आर 3 काइंड्स ऑफ आयरनी। आयरनी के 3 प्रकार होंगे। सबसे पहला आयरनी का जो प्रकार होगा वो कहलाएगा वर्बल आयरनी। सेकंड ड्रामेटिक आयरनी एंड थर्ड वन सिचुएशनल आयरनी। अब आइए हम बात करते हैं कि आयरनी जो है उसका सबसे पहला क्या माध्यम था। तो ये कहा जाता है कि एंशियंट लिटरेचर में, ग्रीक लिटरेचर में सिसेरो के पास, सिसेरो के द्वारा ये लिटरेचर में डिस्कशन का मेन टूल था। और लेटर ऑन इन लैटिन में यदि हम बात कर रहे हैं तो लैटिन में सिसेरो ने इसको डिफाइन किया, द सेइंग ऑफ वन थिंग एंड मीनिंग इज अनदर। इन द व्यू पॉइंट और द definition of a Cicero,
he says the saying of one thing and the meaning another. और लैटिन में यदि हम बात कर रहे हैं तो इसका प्रयोग जैसे होरेस के द्वारा प्रयोग किया गया और इसी ने आगे जाकर इसको ब्रॉड किया। हम दोनों तीनों जो आयरनी बेसिक रूप से हैं इनको हम समझते हैं। सबसे पहला जब वर्बल आयरनी आया तो व्हाट डज मीन वर्बल आयरनी? वर्बल आयरनी का क्या हम मतलब कहें? वर्बल आयरनी मीन्स इट अराइजेज आउट ऑफ व्हाट इज सेड। वर्बल से हम समझ रहे हैं कि जो कहा जाए, कहा क्या जाए और उसका अर्थ क्या निकले, that is regarded verbal irony. Second one, dramatic irony. As a matter of fact, here term dramatic, that means it is applied in drama. And what does mean dramatic irony? Dramatic irony का क्या मतलब होगा? Dramatic irony means on the stage the agent means the characters don't know, while the spectators know what the character did or done. And for this purpose, they also burst into laughter. That is a dramatic irony. And third one, the situational irony. It out of what is done. और सिचुएशनल आयरनी जो एक्शन है जो किया जाए कैरेक्टर के द्वारा, किया कुछ जाए उसका अर्थ कुछ और निकले, तो ये सिचुएशनल आयरनी कहलाएगी। हमारे पास बेसिक आयरनी 3, वेरी फर्स्ट वर्बल, सेकंड ड्रामेटिक एंड थर्ड वन सिचुएशनल। इसका मेन पर्पस किसी व्यक्ति संस्था की गलती को, अव्यवस्था को सुधारना, टू करेक्ट करना, रिफॉर्म करना। हमारा सेकंड टर्म जो है सेटायर, इट रेफर्स टू अ लिटरेरी कंपोजिशन इन विच वाइस, folly or a foolish person is held up to ridicule. किसी भी दोष, किसी भी कमी और किसी भी अव्यवस्था को रिडिक्यूल, बड़े ही मॉकिंग वे में प्रहार कर उसे उजागर किया जाता है। इन अदर वर्ड्स यदि हम बात करें, सेटायर में बी डिस्क्राइब्ड एज लिटरेरी फॉर्म डिजाइन्ड टू इंसाइट कंटेम्प्ट, अम्यूजमेंट और द डिस्गस्ट एट व्हाट इज रिडिकुलस। ये दूसरे तरीके से जो जिस व्यक्ति, वस्तु, संस्थान पर शब्दों के माध्यम से प्रहार कर, उसका उपहास कर, लेकिन उसका मेन पर्पस ये नहीं होता। क्योंकि ये इसलिए होता है यदि हम सेटायर के मेन पर्पस, मेन मोटो पर बहाएं और ये चर्चा करें कि लिटरेचर में सेटायर एटलीस्ट वाई अप्लाइड, क्यों अप्लाई किया जाता है, तो इसके मेनली
चार कारण निकल कर आते हैं. नंबर 1, टू एंटरटेन. नंबर नेक्स्ट, टू क्रिटिसाइज. नेक्स्ट, टू एडुकेट. And the fourth one, to unite people. As we know, literature is the mirror of the contemporary era. Literature is the mirror of the culture or the society. Then no doubt, satire as a weapon in literature, it through these four tools: criticizing, educating, entertaining, and uniting. That is the mainstream of the literature, that in the swing of the humor, literature be presented, so that the main purpose of the application can be achieved, and here with the satire. And when we come to the kinds of the satire, as the inventor in Latin, Horace and Gaius Lucilius, defined and maintained the glory of satire. Later on, as in England, at 14th century, Geoffrey Chaucer, and especially in England, satire in 16th century. All around in literature, satire had become the head fountain of the expression. In 16th century, all writers applied very frequently. And when we come to the types of the satire, very basic. There are three: Horatian satire, Juvenalian satire, and Manichaean satire. These are the basic satires. But further, on the basis of the content, on the basis of the themes, when we come, these are also encountered, the direct or formal, indirect satire, political, social, and parodic satires. These all are the satires applied in literature, but basic these three to be noted down. In England, especially Jonathan Swift, in the hands of Jonathan Swift, and later on Alexander Pope, so many, so means in 16th century it has become very common. So concludingly, now we should try to differentiate these both terms. What is minor difference? And when we come, that means a satire is a composition in which vice and folly is held up to ridicule one man, laughs at the another. That is the satire, but in irony, a man is mocked by fate and facts. That is the basic difference. Because these are to be dealt very minorly. It is also the cause of confusing to the learners or the beginners. What the basic difference? So keep in sweet memory that irony means
The man is mocked by the fat or facts. While in satire that is the composition, vice and folly or foolishness is held up to ridicules. That is the basic difference, and I think it will be very helpful to you. You will have informative references, informative discussion, and I would like also invite your kind attention. Comment if you find very helpful for the purpose of competition or the academic exams, then we will come with other videos. Thank you. We'll meet you next video.